Annex Pharma for providing this opportunity to speak on that particular subject, heart failure. And this is just an introduction. Most of you may be knowing to my Facebook page and YouTube channel. A lot of academic stuff is there, along with some public awareness videos as well. So you can direct your patients as well to see these all basic informations regarding cardiology and even general topics as well. And secondly, as Tayyib mentioned, we have just started a monthly webinar series with the name of Cardio Web Series. It's once a month. We did last month dyslipidemia, and in this month we are going to have hypertension. On 11th March, 3:30 p.m. I'll share the link. It's on Zoom link as well for direct live session. Then it will be recorded and on YouTube channels as well. Dr. Fawad Farooq is my YouTube channel, and you'll see dyslipidemia update is there, which we did last month. And we'll trying that just in 1 hour, we'll cover the scenario-based topic and all update managements in related to that scenario, so that you get updated knowledge how to manage your patients on different basic topics of cardiology. I'm discussing management of new onset heart failure, some new things coming up in heart failure management. I think you all know them. What we'll do, we'll just revise them, how to incorporate them into our clinical practice, these new things. I personally feel there is a lot of inertia in starting new things in your management strategy. We are continuing with whatever we are dealing with, ACE, beta blocker, diuretic, these three things. We are not jumping beyond that and adding on the newer things which have shown a lot of evidence in improving care of heart failure patient. And so we'll try to cover that. Usually, even for juniors, our present status of heart failure, our thinking is still कि heart की pumping activity कम हो जाए, so this is heart failure. Now the heart failure is very complex in terms of understanding. A lot of your patient where your EF number is very good, but they may be having heart failure, and we'll see how. ये हालांकि 2001 की definition है. Even this definition was covering all those categories of heart failure. Clinical syndrome that can result from any structural or functional cardiac disorder that impairs the ability of the ventricle to fill with or eject blood. It's not just pumping or ejection fraction, it's filling also. So if you have impaired filling in your heart, that's also heart failure. And I'll show you the new comprehensive definition. And now that's why they have put in NT-proBNP as a basic screening test for heart failure. Why? Because a lot of things are dealing with adequate filling activity of the heart. Heart failure can be defined as abnormality of cardiac structure or function leading to failure of the heart to deliver oxygen at requirement of metabolic tissue despite normal filling pressure or only at the expense of increased filling pressure. And there are a lot of patients, middle-aged female, hypertensive with very normal EF, they are actually in heart failure, constantly complaining of SOBs. This is all heart failure with preserved ejection fraction. And we are getting newer modalities in echocardiography. Ejection fraction is just a cut section, two-dimensional, and you're just seeing how the heart is contracting from just two segments, that's it. And now we have got so much new things in assessing cardiac function, its longitudinal strains, how is it contracting, and Dr. Suhail is there, he'll tell us that how the different heart are different in a different ways they are contracting and adding to that heart failure with preserved ejection fraction. And now things are going to even molecular levels. We are getting new drugs, omectinib, mecarbil and vericiguat and others to take care of cellular level, what's happening at cells in heart failure. That's beyond subject, we'll just cover the basics.
And that's why, with that definition, the terminology now we are using is HFpEF, HFrEF, and this is a middle thing, marginally reduced EF. And we are not really knowing much about these two things. And we are trying different strategies to take care of that HFpEF. And now we have got some hopes with SGLT2 across the spectrum of this heart failure. Otherwise, previously we were tried even ACE-ARBs for HFpEF, no ARNI for HFpEF, no actual benefit outcome in HFpEF of these all drugs. But SGLT2 is the only drug which has shown some promising effects in this category as well, marginally reduced and have a preserved EF as well. This is just on the previous classification was just on the basis of ejection fraction. But this is also important when you're dealing heart failure. A heart failure patient with stable is something different. इतना प्रॉब्लम होता है बेचारा EF 35% वाला पेशेंट, ना वो कैटरेक्ट सर्जरी करा सकता है, ना वो किसी उससे गुजर सकता है, बस हर एनेस्थेसिस ये नहीं देखता कि उसकी कैटेगरी क्या है, न्यू ऑनसेट है, ट्रांजिएंट है, क्रॉनिक है, वर्सनिंग है, इम्प्रूव है, स्टेबल है, एक्यूट है. These all should be looked at when you are dealing with a patient who's having heart failure. Just EF का नंबर heart failure नहीं है. Then left hai, right hai. So a lot of things you have to look for when you're dealing a patient with heart failure. We mainly concentrate on systolic heart failure, which is HFrEF. Background मैंने सारों का दे दिया है, but we can't cover it in 30 minutes time. So what I'll focus on that HFrEF, which is when your ejection fraction is less than 40%. But it doesn't mean that heart failure is just ejection fraction less than 40%. Even 40 to 50, even greater than 50 can be heart failure, marginally reduced or HFpEF. And you have to look for all those things, precursors, risk factors, symptoms, some findings in echocardiography that will tell you that you're dealing with HFpEF, and try to, we have not any definitive treatment, but taking care of risk factor, rate control, sometimes even low dose diuretics, these all may help your patient. So you have to try different strategies for your patient with HFpEF, but always consider them that they can have HFpEF. EF 55 and above doesn't mean no heart failure. That is the important point to be noted. Now heart failure has multiple causes. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल लेवल पे भी, इवन हमारे जूनियर्स भी, कि हार्ट फेलियर डायग्नोज कर लिया तो समझा कि बस काम हो गया, और उसकी डायग्नोसिस यही होती है बस LVF. This is not a diagnosis. This is a syndrome you have identified. Now you have to look for cause. What's the etiology behind that heart failure? Because a lot of causes may be reversible, like especially the coronary artery. So if sometimes you may get patients with coronary artery disease without background history of MI, young, middle age, unko CMP label karke hamesha ke liye dump kar diya. And they may have some reversibility, may have some chest pains. So always when you come across a patient with heart failure, try to look for causes. And there are multiple ones. You see? और ये सब चीज़ें आती फिर वापस इसी चौरंगी पर हैं, हर जगह से घूम के अल्टीमेटली ये हार्ट फेलियर देंगी. तो उस सूरत में वी हैव टू लुक फॉर व्हाट वी आर डीलिंग विद. कॉमन कॉजेज सर्टनली आर दीज मायोकार्डियल डिजीजेस, व्हिच इज CAD, hypertension and cardiomyopathies, which we deal secondary to myocarditis or anything. But there are a lot of other things which sometimes these all are in combination. Some may be acting as an aggravator, sometimes even as a etiology. Sometimes AF patient persistent tachycardias can lead to heart failure. So you have to at least cone down in your mind what could be the cause of heart failure in this particular patient. You're really
struggle doesn't end at just identifying heart failure, because you have just identified outcome of that particular etiology. Try to dig out etiology as well, and that is the pathophysiology. We all know it. कोई भी हो, ultimately injury, वो, and then a vicious cycle of that renin, angiotensin and sympathetic activity which overshoots beyond certain limits, and with drugs we are trying to bring them to a level कि वो उससे कम भी ना हो और उससे ज़्यादा भी ना जाए. और अभी तक जो पेफ में देखा गया वो लगता है कि ये पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ये वाली. इसीलिए हमने जब उसको अल्टर करने की कोशिश की तो कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला पेफ वाले ग्रुप्स में. उसमें ज़्यादा यही लगता है कि आप रिस्क फैक्टर्स को टेक केयर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा रादर देन सिम्टम्स. वी ऑल नो, आई एम स्किपिंग दीज. कुछ बुनियादी इन्वेस्टिगेशन विद अ व्यू ऑफ पिकिंग द डिजीज इटियोलॉजी एज वेल एज एग्रीवेटर्स. ये ईसीजी सिर्फ उस लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें ये झांकना चाहिए कि ये आपको थोड़े क्लू इटियोलॉजी और एग्रीवेशन के लिए दे रही है या नहीं दे रही. एक्सरे है, वी ऑल नो समटाइम अल्टरनेटिव डायग्नोसिस यू कैन गेट फ्रॉम एक्सरेज. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है बीएनपी. And anti-pro BNP is now more valid as compared to pure BNP for diagnosing, for management, for follow-ups. लेकिन अच्छी clinical judgment can take care of this issue, but it helps a lot in titrating your management strategies. Ultimately, assessment of LV function. जो एल्गोरिदम पिछला ईएससी गाइडलाइंस का था वो यही था कि भाई आपको सस्पेक्टेड हार्ट फेलियर है, अच्छी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और ईसीजी, ये तीन बुनियादी चीज़ें तो करनी ही करनी है हर पेशेंट में. एंड देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस यू स्टेज द पेशेंट्स. स्टेजेस में पहले ए बी सी डी कहते थे, अब थोड़ा आम आदमियों को समझाने के लिए इसको कर दिया है एट रिस्क of heart failure, pre-heart failure, resistant heart failure. D जो है वो वहाँ पे आ गया. इसमें हमें सब पता है कि A, B, C, D क्या हैं risk factors. B, structural abnormality without symptoms. C, with symptoms. D, resistant heart failure. Something about new symptomatic patient with symptoms of heart failure. उसमें बड़ा important होता है ये जज करना, is this heart failure or something else, acute symptomatic patient में. और उसके साथ साथ what are the precipitants. इसमें अक्सर मिस हो जाता है हमारे इवन ERs में. 4-6 घंटे किसी ने उसकी ECG नहीं की, लेट नहीं पा रहा था, बाद में पता चला था तो हार्ट फेलियर लेकिन acute MI था. So always try to dig out what's the aggravation which has led to this acute heart failure. A number of times you found some acute etiology that can be treated. So it's very important to judge ACS है, कोई एरिथमिया है, कोई acute valve disorder, कभी कभार सब ऑप्टिमल आई चल रहा होता है, MR एकदम से हुआ है और वो पेशेंट फेलियर में आपके पास आ गया है. इसी तरह और ऐसी तमाम चीज़ें जो acute heart failure में acute etiology बन सकती हैं. इज़ दिस हार्ट फेलियर, अल्टरनेटिव ज़रूर सोचें. क्रॉनिक लंग है, एनीमिया है, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. और उसके साथ साथ स्पेशली इफ़ यू आर एट प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर सेटिंग, इज़ द हार्ट फेलियर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, ताकि आप ऐसे सेटअप में हों जहां इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की हेल्प दी जा सके. बहुत इंपॉर्टेंट. इसका मतलब है whenever we deal a patient with symptoms of heart failure, we have to go through these 3 steps. Diagnosing heart failure, is it heart failure or not? What's the etiology? What's the aggravating factor? And what is the stage of heart failure we are dealing with to know is it acute, subacute, chronic, stable, unstable, what kind of heart failure we are dealing with. This is the algorithm we have to follow. History, physical, ECG. After these 3 things, if you are still thinking that you are dealing with heart failure, usually algorithms suggest anti-pro-BNP. If it's negative, heart failure is out.
but this is for acute symptomatic. Sometimes you may be dealing with a very stable, then your anti-pro BNP will be, but usually in stable heart failure, there are chronic illnesses. You may get a lot of additional things to support previous echocardiogram, ECG and other to suggest this is a patient of heart failure, but now he is stable. This is purely for those who are with acute or subacute symptoms. हम अमूमन ये चीज़ नहीं करते. We go with our clinical judgment and do echocardiography. Actually this helps you in patient with HFpEF as well. क्योंकि HFrEF में तो echo आपको बता देगा, HFpEF में echo नहीं बताएगा. लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेज हो और echo नॉर्मल हो तो आप स्टिल उसको हार्ट फेलियर कंसिडर करेंगे क्योंकि फिलिंग प्रेशर्स बढ़े हुए होंगे. So it do helps you in patient who have acute or subacute symptoms. Anti-proBNP raised with normal EF, you may still think of that something may be going wrong with fillings issues, so it may be HFpEF. So उस सूरत में आपको हेल्प ज़रूर करेगा. चूँकि हमारे जहन में अब HFpEF इतना होता नहीं है, हमारे जहन में बस EF होता है, 40 से कम होगा तो हार्ट फेलियर, अदरवाइज हार्ट फेलियर नहीं है. So it will help you. Echocardiography नॉर्मल नो तो फिर बड़ा अनलाइकली हो जाता है आपका हार्ट फेलियर. लेकिन इसमें इट्स नॉट दैट सिंपल. अ लॉट ऑफ क्लिनिकल विजडम इज आल्सो इन्वॉल्व. योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ECG फाइंडिंग, एक्सरे एंड ऑल अदर थिंग्स यू हैव टू मर्ज टुगेदर टू आंसर नॉट जस्ट हार्ट फेलियर, etiology aggravating as well. That is also important. Regarding management strategy, और अभी तक हमारी यही चल रही है. ACE, ARB, क्लियर कट, डायरेटिक अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्टेटस. अमूमन ये दो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं अभी भी. देन लुकिंग एट कंपेलिंग इंडिकेशन, नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वी एड ऑन, देन वी एड ऑन बीटा ब्लॉकर. इसके बाद फिर बहुत कम लोग MRA ऐड करते हैं और MRA एडिंग मीन्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एडिंग एन MRA with ACE ARB on board, potassium and creatinine should always be looked at. तो ये अगर आप हवा में नहीं शुरू करेंगे with ACE ARB, बेसलाइन पोटेशियम का पता होना और फिर सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग पोटेशियम की बड़ी इंपॉर्टेंट है. यूजुअली आई पर्सनली गिव MRA along with furosemide. प्योर सिर्फ ACE ARB के साथ MRA, I personally have experienced a lot of hyperkalemia because most of middle-aged diabetics have compromised renal function. So if you can follow your patient, well good, you can give. ARNI उसके बाद हम करते थे, जैसे अभी तैयब ने बात की, ACE ARB पे intolerant है तो ARNI. That's the common conventional way to approach management of heart failure. But now they are advocating these 4 straight away. Now it's not easy to start 4 drugs simultaneously in patient with heart failure. Guideline तो suggest कर रही है, but you have to judge your patient status. और इसमें मैं बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ, अक्सर आपको बीटा ब्लॉकर के लिए प्रॉब्लम क्या आती है, रेट एडिक्वेट होना चाहिए, प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, वॉल्यूम का स्टेटस एटलीस्ट यू वॉल्यूमिक तो हो चुका हो. हाइपर वॉल्यूमिक में हम बीटा ब्लॉकर अमूमन अवॉइड करते हैं क्योंकि इस वक्त मरीज़ को उस हाइपर वॉल्यूमिया से निकलने के लिए अपनी सिंपैथेटिक ड्राइव, भाई आप डोपामीन डोब्यूटामीन क्यों देते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए देते हैं. तो उस वक्त आप नॉक डाउन नहीं करना चाहते अनलेस एंड अनटिल यू गॉट सम मार्जिनल स्टेटस एंड सम टैकीरिथमिया गोइंग ऑन. यस, वे एट दैट स्टेज बीटा ब्लॉकर डू हेल्प. आर्नी या ए ये अभी इन्होंने ले आए कि राइट फ्रॉम द आउटसेट यू कैन स्टार्ट आर्नी. अभी जो हम बात कर रहे थे ऐसे पेशेंट्स की बात कर रहे थे जो पहले से ACE ARB पे स्टेबल चल रहे हैं, उनको आर्नी पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो स्टेबल हैं. बट न्यू ऑनसेट हार्ट फेलियर में आप आर्नी स्टार्ट बिफोर ACE ARB कर सकते हैं. नाउ द गाइडलाइंस आर सजेस्टिंग. बट अगेन फॉर आर्नी यू नीड एडिक्वेट प्रेशर, you need a good potassium status, you need a good renal status. ये 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. MRA के लिए मैंने पहले ही बात की. MRA जब भी आप आर्नी के साथ या ACE ARB के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो पोटेशियम और रीनल फंक्शन पता होना चाहिए. अब मज़े की बात देखें, SGLT2 is the only drug you can give
to give to every set of patient. प्रेशर बॉर्डरलाइन है, दे सकते हैं. रेट कैसा है, दे सकते हैं. रीनल फंक्शन कैसा है, दे सकते हैं. So I personally feel in a lot of patients who are at verge of that instability and you can't give all 3-4 together, you got a new, you can say, arm in your armamentarium to add on. क्योंकि अमूमन आप ऐसे प्रेशर्स जो हार्ट फेलियर के होते थे जिनके 90-70 प्रेशर्स हैं उसमें बीटा और आर्नी दोनों नहीं दे सकते. एक ही ट्राई करेंगे ना, बट ये दे सकते हैं. So you got an additional arm to use in these threatening patients who have borderline pressures. Even it reduces your need for diuresis as well. वहाँ से furosemide की need भी कम होती जाएगी. Pure diuretic नहीं है. So I personally feel, and even without diabetes, ये भी जहन में रख लें. It's not for diabetic patients. It's for every heart failure patient with or without diabetes. So only drugs which can fit in every set of patients. ये बड़ा important है SGLT2 के लिए. और we hardly see SGLT2 even diabetologist presentation who in patient who are with heart failure or ischemic heart disease. हम तो किसी ना किसी तरह अब ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन में आती है ना, तो जिसकी मेटफॉर्मिन चल रही है उसमें साथ साथ वो मिला के देनी शुरू कर दी है कि बाद में फिर अपने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा देंगे. ये थोड़ा सा और एल्गोरिदम कंप्लीट है कि ये चारों दवाइयाँ विद डायरेटिक अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्टेटस. ये जूनियर्स को समझाना बड़ा ज़रूरी है. दे थिंक दैट डायरेटिक इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हार्ट फेलियर मेडिकेशन. नो, diuretic has no mortality benefit, it's only symptomatic control. And symptoms, if your patient is adequately following his compliant, his intake of salt and water is adequate in a way that it's managing his volume without diuresis, you have to cut down the dosages and ultimately you can go without diuretics. और फिर अच्छा होता है कि मरीज़ को आप एक अपना ड्राई वेट, हम कहते हैं कि भाई यू वॉल्यूमिक स्टेट पे अपना वेट, और फिर वो रोज़ाना की बुनियाद पे वेट कर ले. कोई भी वेट 3-4 दिन में एकदम से 2-3 किलो वेट बढ़ना कोई मसल तो नहीं डेवलप हुआ ना, इट्स ऑल वाटर. उसको गाइड कर दें कि जब भी आपका वेट इस तरह से बढ़ेगा तो वाटर पिल आपने ये पेशाब की गोली लेनी है और वज़न को कोशिश करना है यहाँ तक आए. यूजुअली योर फ्रैंक पल्मोनरी एडेमा गिव्स टाइम टू डेवलप. हाइपोवोलीमिया होगा फिर फ्रैंक पल्मोनरी एडेमा आएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का एग्रीवेटर आ जाए. अदरवाइज क्रॉनिक स्टेबल हार्ट फेलियर में हमारे उसमें जितना भी देखा गया है ज़्यादातर वही होता है. अल्टीमेटली आप पूछें तो कहते हैं, फिर चुपके से बताते हैं ये पेशाब वाली गोली नहीं ले रहे, बहुत पेशाब आता है इससे. बट दे नीड टू वी नीड टू टेल देम अबाउट दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेशाब वाली गोली. पर प्रॉब्लम तो करती है लेकिन मजबूरी है. और फिर आप अपना पानी कम कर दें, नमक कम कर दें तो इसकी ज़रूरत कम होती जाएगी. एंड रेस्ट ऑफ द ड्रग्स एस, बीटा ब्लॉकर, MRA एंड SGLT2. आर्नी का certainly theoretically and practically we know that it's slightly superior to ACRB because now you are addressing the heart failure by 2 different mechanisms, renin-angiotensin as well as natriuresis. So that means you are taking care of 2 pathways with ARNI as compared to ACE or ARB, and it will certainly give benefit beyond ACRB as compared to solely on rest. We all know, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता, ये आपके उसमें नहीं है इतनी चीज़ें, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं कि बहुत ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स हो, यानी बंडर ब्रांच ब्लॉक आपको वाजे तौर पे नज़र आ रहा है आपके किसी पेशेंट में ECG में और 150 मिलीसेकंड से ज़्यादा है, तो इसकी ये क्लास 1 बन जाती है फॉर CRT इफ़ ही इज़ सिम्टोमेटिक ऑन योर गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट. तो ये वाला पेशेंट. इसी तरह इस्केमिक पेशेंट है, उसका EF लेस देन 35% है, तो फिर ICD की इंडिकेशन क्लास 1 बन जाती है. तो ये थोड़ा सा जहन में रखें, ऐसे मरीज़ जिनके EF 35 से कम हो और QRS बहुत ज़्यादा वाइड हो और आपके पास सिम्टोमेटिक है, तो अच्छा है किसी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दें इफ़ ही कैन अफोर्ड. हमारे यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, इतना मसला नहीं, लेकिन हर जगह इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट.
So sometime this ICD would help them in terms of their symptoms. इसको मैं फिर यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, बड़ा बिजी है इस पे. अब थोड़ा सा हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं अगले 5 मिनट में. 2 केसेस हैं और इसमें थोड़ी सी आप लोगों की इनपुट चाहिए होगी. 50 years diabetic female with occasional exertional shortness of breath for 1 month. अब देखें डायबिटिक फीमेल है 50 years की. अमूमन वैसे मेरे ख्याल है हर खातून को थोड़ा सा चलने पे सांस तो, यानी बड़ी मुश्किल से कोई ऐसी खातून मिलेंगी जो कहेंगी मुझे सांस नहीं होता है. आप सवाल करें ना और अल्टीमेटली सांस चढ़ता है डॉक्टर. नाउ दिस shortness of breath can be just deconditioning to maybe she is diabetic, so a very broad horizon or spectrum of the symptom. तो एक सजेशन तो बन सकता है कि हार्ट फेलियर है इनको, तो क्या नेक्स्ट होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, देन ईसीजी. हमारे लिए तो वो समझ लें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए तो अज्यूम्ड है कि हमने लेनी है ही है. बट फॉर जूनियर्स ऑलवेज गिव देम दी, बिकॉज हमारा एल्गोरिदम आप याद करें क्या था? सिम्टम सजेस्टिव ऑफ हार्ट फेलियर, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, एग्जामिनेशन. अच्छा, हिस्ट्री में भी हमें थोड़ा सा अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहिए. ये देखें, हिस्ट्री ऑफ CAD, MI, रिवेस्कुलराइजेशन, आर्टीरियल हाइपरटेंशन, कार्डियोटॉक्सिन, ड्रग्स, डायरेटिक्स, यानी हर वो चीज़ जो इटियोलॉजी या एग्रेवेटर बन सकती है उसकी डिटेल्स हिस्ट्री में लेनी ज़रूरी है. सेम अप्लाइज टू एग्जामिनेशन, जो हमें हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस या एग्रेवेटर को पिक करने में हेल्प करे, वो हमें क्विकली स्क्रीन करना है एग्जामिनेशन में. वो दोनों चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ. अलॉन्ग विद डायबिटीज शी इज़ हाइपरटेंसिव विद हिस्ट्री ऑफ एन एपिसोड ऑफ स्वेटिंग, chest heaviness of few hours about 2 months back with normal examination. So a clue towards something, yeah, some coronary event. So then certainly अब ECG किसी और नज़रिए से आप देखेंगे, वरना पहले ECG क्या देखते, बस ECG के लिए. अब इस बैकग्राउंड के साथ जब हम इसकी ECG देखेंगे तो हमारे जहन में कुछ और होगा. जी, are you getting any clues from this ECG? जी, right bundle branch block is there. Yes. Yeah, but just say Q waves in inferior leads. We have to validate it further. Although history suggesting with that Q waves 2 months back कुछ event हुआ था और ये Q waves हैं, और अक्सर ये जो इंफीरियर की क्यू वेव्स हैं अननोटिस चली जाती हैं. इंटीरियर की तो खुद बोल देती हैं कि मैं हूँ, इंफीरियर की थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं. नाउ व्हाट नेक्स्ट? आइडियली हमारे एल्गोरिदम के लिहाज से एंटी प्रो BNP उस एल्गोरिदम के हिसाब से, बट वो चूंकि ये स्टेबल हो चुकी है, SOB अभी भी चल रहा है, तो वो रेस था. लेकिन अगला स्टेप उसके बाद फिर एको होगा. Ejection fraction 35% with akinetic infero-posterior wall. What next? Angiogram. How many of you are agreed with angiogram or anything else? Presently she is complaining of SOB. Viability. That's also on. अच्छा, एंजियोग्राम भी गलत नहीं है, अदर वे राउंड भी चल सकते हैं. एंजियोग्राम से आपको एनाटॉमिकल स्टेटस रिस्क पता चल जाएगा. ये मे भी निकल आए लेफ्ट मेन 3VD. तो वायबिलिटी हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर है ना, वो अनक्लियर टेस्ट है. सच्ची बात है, वो मिसगाइड कर देता है. पता नहीं क्यों मैंने उसके रिजल्ट अभी तक जो है बड़े मज़ेदार. अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्री एग्जिस्टिंग एनाटमी अवेलेबल एंड देन यू विल डू, बिकॉज समटाइम परसेंटीन करते हैं, कभी स्ट्रेस करते हैं, अमूमन रिजल्ट्स उसके. और ऐसे कई लोग आप देखेंगे उनको फिक्स्ड इफेक्ट दिया हुआ है, अगले 3 महीने बाद फिर MI के साथ आपके पास आए हुए हैं. तो एनाटमी जैसे आपको मिलती है RCA मिड से टोटल एंड रेस्ट ऑफ द वेसल्स आर नॉर्मल. नाउ आई विल गो फॉर वायबिलिटी फर्स्ट बिफोर फिक्सिंग RCA. लेकिन एंजियोग्राम में आपकी निकल आती है लेफ्ट मेन 3VD एंड अ लॉट ऑफ यंग फीमेल्स वी हैव सीन डायबिटिक्स. अजीबो गरीब किस्म की एनाटमी निकलती है, और अक्सर कभी सिम्टम भी नहीं होते, बिल्कुल मिनिमल से और ऐसे. सो बोथ
You both were right. Viability भी कर सकते. Sir, I got a very personal experience of my auntie few months back. She is diabetic for the last 10 years. She was having on and off shortness of breath, which was not making any problem to her. Just 48 hours before going to the procedure of angiography, she was having a chest pain, and I did the routine investigation that was totally normal. And I went just for a routine angiography, and then she was having a triple vessel disease, more than 90%. So we have come across so many such anatomies. That's why whenever I've found a clue towards ischemic heart disease in a background of middle to young age females, diabetics, I prefer angiogram first and then planning other things. तो एंजियोग्राम है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट देखें, स्ट्रेटजी टोटली. पहले हम सिर्फ इसको डायबिटिक, अब ये हार्ट फेलियर भी हैं, इटियोलॉजी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गई, एग्रीवेटिंग. इस वक्त ये है नॉन कंप्लाइंस, दवाई नहीं ले रही और इनको पता ही नहीं है कि ये हार्ट फेलियर है. स्टेज सी का हार्ट फेलियर इनका चल रहा था. Just quickly come to another case and then we'll end the presentation. 70 years. It's also very important to exclude mitral regurgitation in such cases. Agree. We have echo here, but in other patients who have inferior wall MI, young, always exclude mitral regurgitation as well on your examination as well as echocardiogram. और कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे वो नहीं होगा, थर्ड डे होगा, तो वो सब्सिक्वेंट एको अगर आपका फेलियर काबू में नहीं आ रहा या फर्दर एग्रेवेट हो रहा है, सो ऑलवेज डू अ री एको आफ्टर सेकेंड थर्ड डे. 70 years diabetic with severe shortness of breath for a long period, aggravated since 2 weeks with orthopnea and PND. इसमें इस ECG में बहुत सारी कहानी होगी. What next? वही पुरानी हमारी हो गई. ये एक्यूटली हार्ट फेलियर है तो थोड़ा सा हमें ये जज करना है ये सारी चीज़ें. इनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ MI 5 years बैक, नो रिकॉर्ड अवेलेबल, नॉन कंप्लाइंस टू ट्रीटमेंट, हार्ट रेट 130, irregular ब्लड प्रेशर 90-70 विद इंस्पिरेटरी कैपिटेशन ऑल ओवर. जी ECG पे बहुत कुछ है जो हिस्ट्री के साथ कोइंसाइड करके आपको बताएगा. थोड़ी सी एक्यूट मैनेजमेंट डिस्कस करके फिर हम एंड करेंगे प्रेजेंटेशन. जी बिल्कुल. रिदम रेगुलर और इरेगुलर? irregularly irregular and without P wave and very fast, and there are Q waves in anterior territories. तो वो जो इन्होंने अपना सारा रिपोर्ट खो दिए हैं, तो ये बता रहे हैं कि प्रीवियसली एंटीरियर MI के पेशेंट हैं, LVH भी है, AF विथ फास्ट वेंटिकुलर रेट इज़ द न्यू एग्रेवेटर. नॉन कंप्लाइंस होते हैं, बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, एकदम से कोई चीज़ आती है वो ऐसा अनस्टेबल करती है कि बिल इसको कैसे मैनेज करेंगे. कैसे करेंगे हार्ट रेट स्लो? बीटा 90-70 प्रेशर है, फुल ऑफ क्रेप्ट्स है. वेरी गुड. और ये डिजॉक्सिन अभी तक आउट है. अब ये गाइडलाइन में नज़र आनी शुरू हो गई है गाइड कि जब आपका AF कंट्रोल ना हो, आप कोई और चीज़ दे ना सकते हो, स्पेशली बीटा ब्लॉकर 90-70 का इनका रेट चल रहा है. लेट्स सी ये पेशेंट साइनस रिदम में हो और रेट 100 के अराउंड हो और फिर आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सक रहे, ब्लड प्रेशर 90-70 है, तो क्या देंगे अल्टरनेटिव? जी एवाब्रेडिन. मैंने कहा थोड़ी सी इसकी बात भी कर लें. नहीं, मैंने साइनस रिदम का, मैंने इसीलिए उसको कि चेंज किया. एवाब्रेडिन एट्रियल फिब्रिलेशन एग्रेवेट कर सकती है, साइनस से AF में कन्वर्ट कर देती है. ये उसके बिल्कुल. तो AF में तो वैसे ही उसका रोल नहीं बनता क्योंकि प्योर साइनस नोड पे उसका इफेक्ट है. तो इसमें डिजॉक्सिन, और आप किसी वजह से डिजॉक्सिन नहीं दे पाते तो इम्यूड्रोन, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस रादर देन बीटा ब्लॉकर. प्रेशर कंट्रोल कर लें तो फिर ठीक है. तो इसमें हार्ट फेलियर है पक्का, इटियोलॉजी इस्केमिक हार्ट डिजीज है और एग्रीवेटिंग एट्रियल फिब्रिलेशन है. एकाइनेटिक इंफीरियर इन पेशेंट्स में भी 70 years old है, पहले वाइबिलिटी कर सकते हैं, एंजियो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ऑन हैं. जस्ट क्विक रिविजन
to what we discussed: heart failure, clinical history, physical examination, ECG, NT-proBNP, because heart failure is not just low ejection fraction. Heart failure can be marginally reduced EF or even preserve EF. तो ये BNP आपको बहुत हेल्प करेगा उस सूरत में. Then आगे heart failure confirm based on all available data, determine etiology and start appropriate treatment. और appropriate treatment अब हमारे नज़दीक बीटा ब्लॉकर, आर्नी, MRA, SGLT2 inhibitor. These 4 drugs simultaneously according to certainly your hemodynamics, compelling indication, कौन सी पहले फिर बाद में. कुछ लोग कहते हैं 4 week 4 drugs, कि वीकली आप एडअप करते जाएं, देखते जाएं चीज़ों को. और उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव साथ थी, वो इवाब्रेडिन का हमने जिक्र कर लिया कि इवाब्रेडिन बीटा ब्लॉकर के सब्स्टिट्यूट पे, या किसी वजह से आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे पा रहे. अक्सर लोग अच्छे खासे ब्लड प्रेशर पे इवाब्रेडिन दे रहे हैं. भाई अगर ब्लड प्रेशर मौजूद है तो आपके पास बीटा ब्लॉकर को बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है, वो दे सकते हैं. वो किसी वजह से नहीं दे सकते तो आप इवाब्रेडिन ऐड करेंगे. सिमिलरली हमने बात कर ली CRT की, बहुत ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स हैं, CRT आ जाएगी. ICD EF35 से डाउन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो ICD. लेकिन बुनियादी चीज़ें अगर हार्ट फेलियर पेशेंट की सही से मैनेज कर ली जाएं, दैट इज़ कंजर्वेटिव मेजर, इनटेक, सम एक्सरसाइज, रेट कंट्रोल, एडिक्वेट प्रेशर कंट्रोल, टेकिंग केयर ऑफ ऑल एग्रीवेटर्स, अच्छे खासे पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक रखा जा सकता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. यही है कि फ्यूचर में जिस तरह ये हैफरैफ जो है ना करीब आ रहे हैं, फिर यही होता है कि डिग्री होती है, कोई है हार्ट फेलियर होता है. बिल्कुल. इसलिए क्या कि क्लास 2 इंडिकेशन इवन ये है EF लेस देन 50 पे, अर्ली की भी लेस देन नॉर्मल EF के साथ उन्होंने क्लास 2 इंडिकेशन देती है. दिस विल कम अप. नहीं, वैसे अभी जो है ना हेफ पेफ को हम सही मानों में समझ नहीं पाए हैं कि हेफ पेफ के पीछे क्या चीज़ें हैं. जो मेन कैटेगराइजेशन हेफ पेफ और हेफ रेफ की बन रही है, हेफ रेफ में आप क्या करते हैं कि जो जितने कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं उनको आप एड्रेस कर रहे हैं तो हेफ रेफ काबू हो जाता है. हेफ पेफ का अभी तक कोई आइडिया, लेकिन जिस तरह से SGLT2 ने बेनिफिट दिया है, SGLT2 के देखें इफेक्ट ज़्यादातर मॉलिक्यूलर लेवल पे, कुछ रीनल, कुछ मॉलिक्यूलर, कुछ रीमॉडलिंग, कुछ इस तरह चीज़ें. तो उससे लग रहा है कि आपका बेसिक, यानी भाई हेफ पेफ आ रहा है, अगर मायोकार्डियम की आप बात करें तो स्टिफनेस की वजह से उसकी वो कंप्लाइंस नहीं रह रही है. आर्टरीज की बात करें तो उसमें से इलास्टिसिटी ख़त्म होती है तो हेफ पेफ आता है. इन चीज़ों को जो चीज़ एड्रेस करेगी कि उसकी कंप्लाइंस बेहतर हो जाए आर्टरीज की और मायोकार्डियम की रिलैक्सेशन इम्प्रूव हो, इन दोनों चीज़ों को जो चीज़ एड्रेस करेगी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप एको वाइज देखें तो पहले हम जब एक ज़माना था कहते थे कि हेफ पेफ होती कोई चीज़ नहीं है, फिर ये कहा होती तो है बट इतनी बुरी नहीं होती है, फिर कहते हैं इतनी कॉमन नहीं होती है. इसीलिए इफ़ यू टेक अ पेशेंट, देखो हेफ पेफ में EF नॉर्मल है, ठीक है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन. हेफ रेफ में EF कम है, अगर उसमें डायस्टोलिक. अच्छा, ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी अब गलत टर्मिनोलॉजी हो गई. डायस्टोलिक डिस्फंक्शन सिस्टोलिक में भी हो सकती है, इसीलिए प्रिजर्व. वही कह रहा हूँ, नहीं मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब दोनों में फ़र्क क्या है. EF कम है बट इसके फिलिंग प्रेशर ठीक है, वो वॉक अराउंड कर रहा होगा, ठीक है. EF जो है उसका ठीक है बट फिलिंग प्रेशर बढ़े हुए, वो आपके क्लिनिक पे बैठा होगा, ट्रांसपोर्ट रहा होगा. तो दिस इज द फिलिंग प्रेशर दैट विल मेक यू सिम्प्टोमेटिक, दैट विल चेंज योर प्रोग्नोसिस. तो ये दोनों चीज़ इसमें कॉमन है. यानी यही वो फिलिंग प्रेशर वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से नहीं है. क्यों है? मायोकार्डियल की कंप्लाइंस ख़राब हो गई है, उसकी जो एक्टिव रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म थी वो इफेक्ट हो गई है. जो नॉर्मली वो आने वाले वॉल्यूम को इस तरह से अकोमोडेट करता था कि बैक प्रेशर नहीं बढ़ता था, अब वो हार्ट इजेक्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन रिलैक्स प्रॉपर नहीं कर रहा है. और इसकी अभी हमें सही से पता नहीं चल रहा है कि वो रिलैक्सेशन में क्या एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि खास एज, खास रिस्क फैक्टर के साथ रिलैक्सेशन इफेक्ट हो रहा है. कर रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं. अच्छा फवाद, एक चीज़ हम डायरेटिक्स के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर तैयब सब सारे अधिक पल्मोनरी एडिमा में जब हम बात करते हैं पेशेंट की पल्मोनरी एडिमा, स्पेशली आपका लास्ट केस है, पेशेंट इज विद फुल फ्लैट्स, स्टेज 3 स्टेज 4 हार्ट फेलियर, क्लिप क्लास फेलियर में है, वट एवर आउट ऑफ MI सेटअप में है,
patient needs diuretics. Without diuretics, symptoms will not be relieved. Do you think is there any data, negative data, that diuretics is no mortality benefit? देखिए वॉल्यूम If स्टेटस we के don't give मुताबिक diuretics to इवन such जैसे patients, the ACE inhibitors, the beta blockers are not going to settle patients नहीं बट symptomatically. एक्चुअली आपको डायबिटिक्स तो उसको देना है ना वॉल्यूम और इवन वो वॉल्यूम नॉर्मल भी है अगर डायबिटिक्स तो देनी so है, diuretics देने हम मोर्टेलिटी की ट्राई करेंगे तो फिर आप आगे दवाई so diuretics are a necessary evil actually. या So if anything, the mortality would be higher. It's the same thing when you use in cath lab norepinephrine. The mortality is high. प्रेशर उठाना है बट अब आप केस वेज़ो कर ही नहीं पुस्टेट सक करना रहे है, हैं। सब कुछ ही है अगर नहीं आप कुछ। डेटा देखें तो रिदम्स लाएगा। जियोप्लास्टीज में बिल्कुल। लिवोफिड या नॉरएपिनेफ्रिन हमने यूज की, उन पेशेंट्स की मोर्टेलिटी हाई बढ़ है। गई। बट हाउ कैन यू फिनिश What I इट? believe, डॉक्टर तैयब, कि ऐसे जैसे कि एक बंदा ऊपर छोटी मंजिल से छलांग लगाता है, तो डेटा कंपैरिजन ये है कि 10 बंदे छलांग लगाएंगे उनका और 10 नहीं लगाते, हाउ डू यू